So hello everyone, good evening. So this is a very unplanned video that I've drafted in the last minute. So as you all know, tomorrow is the last exam of CA finals, and that is audits exam. So today is the last preparation day, and tomorrow we just have to buckle up for the exams. So I have a few last minute things to say, and I think you should listen it and follow as well. So please stretch today till 12 and 1 a.m. you have the time. Please stretch till that. So I have a few topics that I think you should not leave, and please revise it by the end of today. Anyhow, you cannot leave 2400 series, you cannot leave 3400 series, you cannot leave 800 series, and you cannot leave emerging areas and digital auditing as well. Digital auditing is a very large area, so please, if you have done it before exams, touch it, otherwise do not. Emerging area you have to do. There are 3-4 topics in the role of auditor. The topic it came in November 24 also, so you can leave that. Other than that, you can definitely do, I think this time, any of the principles out of the 8-9 principles they can ask. Then the second thing, there are 2-3 topics that you can leave. I think आपका नहीं हुआ है 1 बजे तक आज रात तक, then leave it. You can leave risk assessment, internal control, audit planning chapter, that due diligence, forensic and investigation. It's very much प्रेस्ड किया जाता है उस टॉपिक को, बट डू नॉट स्ट्रेस ऑन दिस टॉपिक. आई थिंक ज़्यादा नहीं आता, 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं. उससे बदले इफ़ यू डू इमर्जिंग एरियाज, यू कैन जस्ट स्कोर 5 marks, 5 out of 5. So please, you can skip that also. And please try to revise everything as soon as possible, as much as possible. And there are just whatever topics I just said: audit planning, risk assessment, due diligence, forensic investigation. Only these topics you are allowed to leave at the last minute. One more thing, tomorrow morning 10 a.m. और 11 a.m. जो भी आपका टाइमिंग है, जब आप उठोगे, दैट विल बी योर लास्ट पॉइंट. आप उठोगे एंड देन फ्रेश होते हो, नहाते हो, खाते हो, एंड देन एग्जाम हॉल के लिए जाते हो. सो प्लीज़ उठने से पहले ही ट्राई कर लो सारा रिविजन हो जाए, क्योंकि उठने के बाद वी जस्ट स्टडी फॉर द सेक ऑफ स्टडिंग, बिकॉज सब स्टडी कर रहे हैं एग्जाम हॉल में, तो एग्जाम एंटर होने से पहले फिर दिमाग में कुछ नहीं जाती. सो प्लीज़ वो 10 और 11 बजे का जो आपका ब्रेक इवन टाइम रहता है, उसी में आप सब कुछ रिवाइज कर लो. देन एग्जाम हॉल जाने से पहले आपको बैंक ऑडिट और NBFC के लिमिट्स सारे याद करने होंगे. स्टैंडर्ड 40, स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड 40%, 100% यू हैव टू डू दैट, इट कम्स. देन कैपिटल वाली वो रेशियो भी एक बार याद कर लेना. एंड एग्जाम में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 5 मिनट्स हर क्वेश्चन के लिए. प्लीज़ बचा के रख लो, एंड ट्राई टू रिवाइज ऑल दीज न्यू स्टैंडर्ड्स इन द लास्ट मोमेंट ऑल्सो. टुमारो 1 to 2 hours you just give for all these new standards and PE and clauses and everything, so you will be good to go. All the very best.